Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and I'm here to share with you a basic future tense which is help us to a lot of in our daily life. Then how can I speak in the future sense and his sentences? So I gonna tell you and we will learn it. How can the make a structure of the future sense in the future tense? So hello everyone, I am Raj and you are watching this video on my YouTube channel English with Raj. And let's start. I hope you are all well and keep learning. So if I talk about it future tense, then we should use first of all shall and will, because without shall and will we cannot grab the sense of the future tense. So in this sentence, we use shall and will, and shall and will represent the future tense. So we have to use it in the future tense. So यदि हम बात करें कि आप अगर बिगिनर लेवल से हो तो फ्यूचर टेंस में कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाएं और कैसे प्रैक्टिस करें टू स्पीक फॉर अ फ्यूचर सेंस. So many of the people questions is that कि how can I make the future sense, which is basic and common for a speaking purpose, not a grammar and not a competitive examination for that. So जब आप एक स्पीकिंग पर्पज के थ्रू आप अगर यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को तो आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे हर टेंस में होता है. पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, फ्यूचर में किया, बट इसमें एक्स्ट्रा वर्ब होती है विल और सेल, और जो सिंगुलर होती है उसके साथ सेल आता है, जो प्लूरल होती है उसके साथ विल. ओवरऑल सेल ऑलवेज साइलेंट होता है इन केस ऑफ स्पीकिंग. सेल ऑलवेज पोलाइट वे दिखाता है और विल स्ट्रैक्ट वे. सो वी विल लर्न एंड आई विल शेयर विथ यू द स्ट्रक्चर फॉर्मेट which I upload at the last in this video. So don't worry. एंड और उसके साथ में उसका फॉर एग्जांपल भी दूंगा कि आप कैसे इस स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसका स्ट्रक्चर्स इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और साथ ही साथ ये चारों का जो नेगेटिव फॉर्मेट होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. सो अगर आप सीखना चाहते हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, देन यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर्स which I share you, and I hope you enjoy this video and make a more structure of make a more sentence of this structure. So I hope you are very well. Thank you and meet again the next video.